नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। इंडियन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ने इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ को एक पत्र 20 नवंबर को लिखा। ऑपरेशनल सब्सिडियरी कंपनी फॉर बैक ऑफिस जॉब्स इन आवर बैंक। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि बैक ऑफिस के लिए सब्सिडियरी कंपनी की आवश्यकता उचित नहीं प्रतीत होती है। We came to understand through newspaper reports that our bank is going to start an operational subsidiary company for doing back office operations and initially to recruit 100 to 200 employees. The company will have a separate chairman and CEO to head the company. It was also reported that the subsidiary will open within 6 months and awaiting green signal from the RBI. We are equally alarmed and concerned with regard to the appointing executive level post on contractual basis with high pay package, presumably with no accountability. When the whole country and banking industry in particular are witnessing how Bank of Baroda, which is having its own company for outsourcing of jobs, enabling foul pay by the personnel involved in the bank without accountability and resulting in most damaging publicity at a global scale, serious breach of the fiduciary relation in security and data secrecies in the bank in its spirit to promote Bob World Digital app. RBI has to intervene and ban Bank of Baroda onboarding customer to Bob World app. The name of one contractual executive who got powerful political background heading the digital operation is in the news for the fiasco of Bob, who has been removed. Ultimately, the name of the bank is spoiled and more damage has been done with the downfall in the share price. आपको याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के घटना, जहां पे बॉब वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके लिए आरबीआई ने उनको बैन किया था कि आप इसको कोई नया कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी ने अनाउंस किया था कि निखिल हांडा, जो हेड ऑफ द डिजिटल बैंकिंग थे, उनको रिमूव कर दिया गया। एज इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ आवर बैंक, वी नोट इट विथ कंसर्न व्हेन आवर बैंक इज परफॉर्मिंग वेल with steady growth in business and profits, and the performance parameters are also fairly good. The decision of our bank to start a subsidiary company to outsource the job is sending wrong signals, which we perceive as a move towards the privatization. As a responsible trade union, we wish to remind and recall the past history of the Indian bank during 1996, when the bank was reeling under the huge NPA and the loss. Committees, including that the CII headed by Mr. T.V. Kamath, the then MD of ICICI Bank, submitted reports to government to close our bank. We, the trade union, and the staff members of this bank fought with all our might to save this bank. The staff member of the bank sacrificed a lot of entitlements and benefits like foregoing promotion, LFC, travel through fights, etc. for many years and saved the bank. We worked hard to retain customer base, conducted customer meet on our own, undertook several steps to recover NPA, and now we are one of the top performing profit making bank in the history. उन्होंने याद दिलाया कि वो घटना 1996 का याद करिए, जब बैंक में ह्यूज एनपीए था और केवी कामत की रिपोर्ट के हिसाब से बैंक को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो स्टाफ थे, बैंक यूनियंस थी, सब ने मिलके फिर से रिवाइव किया और बैंक को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि बैंक अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है और एक परफॉर्म बैंक के रूप में जानी जा रही है। वी विश टू पॉइंट आउट दैट ड्यूरिंग those turbulent periods, it is our own staff and executive who worked and toiled, formulated innovative methods to bring then Belgrade institution to the top position again.
our bank did not deem it fit to employ any contractual based executive or to hire or to start a new company, yet we have grown slowly and steadily in all possible ways and now in the comfortable position. Hence, we feel it is an insult to our own executive officers and staff in general in hiring individuals like Mr. Akhil Handa in Bank of Baroda in the executive level cadre with very high salary package but with no accountability and responsibility. हम फक्र करते हैं, हमें गर्व है अपने एग्जीक्यूटिव्स पे, अपने ऑफिसर्स पे। किसी बाहर के आउटसोर्स करके निखिल हांडा की तरह बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह कहानी न बनने पाए। Instead, we insist to go for the regular recruitment and utilize our own talented executive to handle this job and task a mark for outsourcing as the deemed to be fit for the market needs. We once again reiterate that we are opposed to any kind of outsourcing of jobs, be it in the executive cadre or starting a company with sole purpose of outsourcing regular jobs, which is not expected of from a public sector bank. We should set an example through regular recruitment on the permanent basis. We sincerely hope you will take a consideration our suggestion and the opinions in the interest of our beloved bank. हरी राव, जनरल सेक्रेटरी। और ये इंडियन बैंक के एम्प्लॉइज फेडरेशन का जो वरीनेस है वो जग जाहिर है, क्योंकि अभी घटना जो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई है और अभी एक घटना यूको बैंक में घटी है, तो बैंक को आखिर में इस तरह से सब्सिडरी कंपनी बनाने और उसमें आउटसोर्सिंग करके हायर करने की आवश्यकता क्या है, जब हम ज्यादा अपना इनोवेशन की तरफ दिमाग बढ़ाते बढ़ाते अपने पुराने पैरामीटर्स को, अपने पुराने रिचुअल्स को भूलते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं जाके झटका लगता है। ये इंडियन बैंक के मैनेजमेंट को एक रिक्वेस्ट है, ताकि यूनियन ने अपना ओपिनियन दिया है कि इस तरह आप बैंक के अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर ध्यान दें, न कि इस तरह के सब्सिडी क्रिएट करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।